Hello my dear students, welcome to mathematics class with your Ashu ma'am. Dear students, today in this video we are going to start our unit 9 of NCERT book, and the name of the unit is Some Applications of Trigonometry. And in this chapter we will learn how to implement trigonometry in our day-to-day life. Earlier also in the introduction of unit 8 trigonometry, I explained you the applications of trigonometry. Now in this unit we will deal with those applications. For example, this Burj Khalifa is there in front of you, and if you want to know its height, are you able to find out its height using any of the method? For example, you just climb it up on its top, and by throwing the rope, it will be quite impossible to find out the height of this Burj Khalifa using the rope. So for this height, we can use the trigonometry. By the use of trigonometry, you can find out the width of any bridge also. Like this is the bridge, and if you want to know its width from this point to this, we can make the use of trigonometric ratios. So in this way, dear students, we can apply the trigonometry in our day-to-day life to find out the height of any tall building or the distance of the foot of that building or tower from us, etc. easily without using rope or measuring tape, etc. Dear students, in this chapter we are going to discuss two types of angle. One is angle of elevation and other is angle of depression. Now what do you mean by angle of elevation? The angle of elevation is the angle between a horizontal line. As you can see, this is the horizontal line from the observer, means from the eyes of the observer, and the line of sight to an object that is above horizontal line. के मतलब अगर हम नीचे से, here we are standing and I am observing any object on the above of my height. मैं अपनी हाइट से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को अगर देख रही हूँ तो उस वक्त हमारी आईज की हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ये एंगल बनेगा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. And the second angle is angle of depression. The angle of depression is the angle between a horizontal line. Again, this horizontal line is same, that is horizontal line of our eyes, horizontal line from the observer, and the line of sight to an object that is below the horizontal line. मीन्स जो अब हमारी आईज के लेवल से नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसे ऑब्जर्व करते हैं उस वक्त ये जो एंगल बनता है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन. मीन्स जो डीप में जा रहा है एंगल. विद दिस वर्ड डीप वी कैन रिमेंबर दिस डिप्रेशन वर्ड. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी दीज टू एंगल्स. One is angle of elevation and other is angle of depression. So dear students, you must note down both the definitions in your notebook also, and you must draw the pictures also. So here also you can see that two angles are there. One is angle of elevation and other is angle of depression. Means this is the eyes, our eye, and this is line of sight. This is horizontal line, and if we'll ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट अबव टू आवर आई, हमारी आई के लेवल से ऊपर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं उस वक्त जो हमारी आईज के हॉरिजॉन्टल लाइन और उस लाइन ऑफ साइट में जो एंगल बनता है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. और अगर हम आईज से नीचे, अपनी आईज से नीचे की तरफ किसी चीज़ को देखते हैं, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन. And angle is always formed with the horizontal line, always remember. So must draw both the pictures in your notebook and must note down the definition of both type of angles, angle of elevation as well as angle of depression. Now let us see some examples of angle of elevation and depression. Dear students, here is a boy standing on the cliff of a mountain, and this is the horizontal green color line which is at the level of his eyes, and an aeroplane is flying in the sky and a ship is floating in the river, right?
So if the boy is observing the aeroplane, then this angle formed will be angle of elevation because ये ऊपर की तरफ देख रहा है. And if this boy will observe the ship, that means he is watching in the depth, means this is angle of depression. तो अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं, we call it as angle of elevation. अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं, this is angle of depression. Let us see one more example. A building is given to you. For example, you are standing on the top of this building and you are watching a car moving on the ground. So you are standing here on the top and you are looking downwards. तो जब हम downward देखते हैं, वो एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम इमेजिन करेंगे, ये जो लाइन बनेगी तो ये एंगल क्या रहेगा, दिस इज angle of depression. And because this horizontal line which is parallel to our eyes and the ground, these both are parallel to each other, क्योंकि दोनों horizontal हैं, तो ये जो angle of depression है ये alternate angles को equal मानते हुए यहाँ पर हम नीचे भी बना देते हैं. So this angle will also become 30 degree alternate interior angles. So this is the case of angle of depression, means when we look at the things from the below the line of sight of our eyes, horizontal line of sight of our eye. Let us see one more example. In this picture also a boy is standing here and a tree is there in front of the boy. If this boy looks the top of the tree, then that means he is watching above the horizontal line, then it will become the angle of elevation. But if he looks at the bottom of the tree, then this is known as angle of depression. In this example also it will become clear to you, like this is the height and this is the horizontal distance. We can assume it from here also. So as he is watching the top of the tree, नीचे से ऊपर की तरफ, so we call it as angle of elevation. And as I told you earlier also, trigonometry is meant for right triangles. So we will make the right triangle, means we will consider tree, a tower, a building always a vertical line, and the distance between the two objects will be the horizontal line, and third line will be hypotenuse, will be the angle of elevation, or that means the line of sight making angle of elevation or angle of depression. Here you can see this is an angle of you just tell me which type of angle is this. This hunter man or a shikari, we can call him, standing on the top of the tree and he is going to hunt this deer. तो यहाँ पर ये छुपके से इसे देख रहा है, और अगर ये डियर नीचे है तो ये नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये एंगल कैसा बनेगा, दिस विल बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये कैसा एंगल रहेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन. In this picture also a man is standing, a person is standing here, and he is looking at the top of a building, means नीचे से ऊपर की तरफ. So this will be the example of angle of elevation. So dear students, on the basis of this concept we can make the projects also, and the device which is used to measure the length of angle of elevation or depression is known as clinometer. So this is the model of clinometer in which we can find out the height of this building using clinometer. So this is unit 9, some applications of trigonometry. So in your book also you will be able to see both type of angles, angle of elevation or angle of depression. Some pictures are given to you in the book also. You can watch these pictures also. Now with the same concept, dear students, let us start with question number 1. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. Means the
सर्कस बॉय इज क्लाइंबिंग अप दिस 20 मीटर लॉन्ग रोप, जिसे एक पोल, वर्टिकल पोल के टॉप पर बांध दिया गया है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल. So how does it look like? Let me show you. So dear students, the figure is already given to us in the book also. This is the pole, vertical pole, and the circus artist is climbing up this rope. This is the rope which is 20 meter long. दे रखा है हमें, and the एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है, तो हम नीचे बनाएंगे एंगल, एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री गिवन टू अस, एंड दिस लेंथ इज गिवन टू अस एज 20 मीटर. सो राइट, सो लेट अस मार्क दिस एज ABC. एज दिस इज अ वर्टिकल पोल, तो ग्राउंड के साथ हमेशा एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा. सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस chapter also, as this is the applications of trigonometry, we are going to use trigonometric ratios only. Now what is the way to find out which trigonometric ratio we should apply? तो उसका क्या मेथड है, हमें एक तो वो साइड इन्वॉल्व करनी है जो कि हमें गिवन हो, और दूसरी वो साइड जिसके बारे में पूछा हो. दे हैव आस्क्ड अस द हाइट ऑफ द पोल, तो हमें ये दो साइड्स इन्वॉल्व करनी है. नाउ लेट अस सी कि ये कौन से साइड्स हैं. नाउ दिस 20 मीटर लॉन्ग साइड इज द हाइपोटेन्यूज एज इट इज अपोजिट टू 90 डिग्री, और हाइट जो है वो एंगल के अपोजिट है, दैट मीन्स दिस इज द परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को यूज करने वाली जो रेशो है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले एंड सोना चांदी तोले. तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जिसमें यूज हों, वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास, दैट इज साइन. तो हम साइन वाली अप्लाई करेंगे. सो ऑलवेज रिमेंबर, those two sides should be selected, one which is given to us and one which we have to find out. अगर हमें ये निकालनी होती तो हम बेस लेते फिर ये, right, because the third side left will be the base. बट यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, तो सो वी विल अप्लाई साइन थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. साइन theta is given to us as 30 degrees, so we'll put it as 30 degree. Perpendicular is the height and hypotenuse is 20 meter. We'll put it here. So sin 30, you must remember the values of trigonometric ratios at specific angles now. So it is 1/2. So this will be h by 20 meter. So by cross multiplication, h is equal to 20 meter divided by 2, that is h is equal to 10 meter. So I hope it is clear to you. So therefore the height of the tree will be, the height of the pole is equal to 10 meters. So this is the answer. So this is very easy. Dear students, in this chapter the figure also carries the marks. If it is not given to us in the question, that means it carries 1 mark. So it is important, and if we'll draw the correct figure, definitely we will be able to solve the question correctly. So now let's move on to question number 2. Now dear students, let us see question number 2 now. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. So let us first of all make the figure according to the given concept. Now let me show you. Let us make a tree first of all. Let this as a tree, right? ये हमने ट्री बना दिया, और ये जो ट्री है ये स्टॉर्म से टूट गया है. तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ से टूट गया है, तो जब ये टूटेगा, या फिर हम कोई और तरह का ट्री ले सकते हैं. तो लाइक वी हैव एन अशोका ट्री अगर हम ले लेते हैं, तो लाइक दिस इज अ ट्री. और फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से टूट गया है, तो इफ़ इट इज़ ब्रेकिंग अप, तो आपको क्या बोल रहे हैं, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ. तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये टूट के नीचे टच हो जाएगा. यहाँ से ये टूटा तो ये कहाँ पर आ गया, ये नीचे आ जाएगा.
यहाँ से टूटा और जो ऊपर वाला पार्ट है वो कहाँ पर टच हो जाएगा, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर टच हो गया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये जो एंगल बना है 30 डिग्री विद द ग्राउंड. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द, दिस इज द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground. This is the top of the tree touching the ground. Here it is touching the ground. Touches the ground. तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ so that you will be. And this distance is given to us as 8 meter. So this is what is given to us. Let us convert it into a figure, flat figure like this. Let this be a tree. तो यहाँ से ये ब्रेक हो गया, ब्रेक होकर ये यहाँ पर आ गया. मीन्स ट्री का नाम था ए बी. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द ट्री ए बी. और ये यहाँ पर, यहाँ से ये टूट गया है. सी पॉइंट ले लेते हैं. ये ए पॉइंट कहाँ आकर टच हो गया है, यहाँ पर. सो नाउ एज दिस इज़ द ट्री, तो 90 डिग्री हमें ट्री हो कुछ हो हमेशा स्ट्रेट एज्यूम करना है. एंड दिस एंगल, दिस इज़ द टॉप जो हमारा ए था, दिस इज़ 30 डिग्री. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द टॉप इज़ 8 meters. Now we need to find out the height of the tree. Now the height of the tree is equal to, let me first of all write height of tree. तो आप देख सकते हैं हाइट क्या है, पूरी ए बी, जिसके दो पार्ट्स हो चुके हैं, AC plus BC. Right? Means we need to find out AC. Means this distance जो ऊपर का टूट के यहाँ आ गया, ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. एंड BC भी चाहिए क्योंकि वो भी हाइट ऑफ द ट्री है. मीन्स इन दिस केस वी नीड टू फाइंड आउट 2 parts. Right? But at a time we can use only 2 sides. तो पहले तो हम कंसिडर, पहले मार्क कर लेते हैं कौन सा हाइट, कौन सा लेंथ हाइपोटेन्यूज है. 90 के अपोजिट दिस इज हाइपोटेन्यूज. एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा. एंड द थर्ड साइड लेफ्ट बी द बेस. तो हम, एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्वेश्चन, हमें वो चीज़ें सेलेक्ट करनी है. एक तो वो साइड लेनी है जो हमें फाइंड आउट करनी है, और दूसरा हमें लेना है जो गिवन है. तो एक बार हम हाइपोटेन्यूज और बेस वाला लेंगे और एक बार परपेंडिकुलर और बेस. तो पहले हम परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो है tan थीटा. सो लेट अस राइट इट एज tan थीटा इज इक्वल टू P by B, and P is BC and base is AB. So let us put the value tan 30 degree, theta given है, BC is we have to find out, and AB is 8 meter. So tan theta is 1 by root 3 is equal to BC upon 8 meter. So ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर लेके जाएंगे तो we'll get BC is equal to 8 by root 3. So this is the one part. This is not the final answer, so we are not going to rationalize it. Similarly, let us find out the part AC. AC is hypotenuse and base. Hypotenuse and base means we can apply cos. Cos 30 degree is equal to base AB by hypotenuse AC. So cos 30 is what? Cos 30 होता है root 3 by 2. AB is 8 by AC. AC is what we have to find out. So by cross multiplication we'll get AC is equal to 16 root 3 by 16 by root 3 meter. But the height of the tree can be measured as, height is AB. Therefore AB is equal to AC plus BC. So AC हमारे पास कितना है, 16 by root 3, and BC is 8 by root 3. तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं. एलसीएम ले लेंगे. root 3, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर इज ऑल्सो सेम, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर सेम. So we'll get 24 by root 3. Now as this is the final answer, we must rationalize it because denominator is carrying the root. So it will become 8.
So answer to this part is 8√3 meters. This is the height of the tree. So let me show you the picture also. So this is what our question is, that a tree is there which is broken by the wind. Wind के चलने से ये टूट गया है. टूटने से क्या होगा? It will bend and its top touches the bottom, making an angle of 30 degrees with the ground. So this is the perpendicular, this is height. By adding the two, we'll get the height of the tree. So dear students, I hope the concept is clear and I hope you will find it very interesting. And this trigonometry is definitely going to be helpful in the field of architect. So that's all for now. Thank you.